हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा मैथ सॉन्ग डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 7.2 of chapter 7, that is coordinate geometry of class 10th NCERT mathematics. This question depends upon section formula. And now the question number 5 is on your screen. Find the ratio means we have to find out here the ratio m is to n or k is to 1 in which line segment joining the 2 points a, that is 1 comma minus 5, and b, that is minus 4 comma 5, is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Question में ये given है कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, that is its coordinates are 1 comma minus 5, so this is 1 comma minus 5. वैसे आपको एग्जाम में ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. I am simply explaining you this only, that is why I am writing here. Yes, and other point B is minus 4 comma 5. ये B 4 comma 5 है. इन A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखिए दिस लाइन इज ज्वाइनिंग, यस दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P लेट. यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और ये एक्स एक्सिस है. Let the point of P be x comma 0 because we know that any point, the y coordinate of any point on x axis is 0. किसी भी y coordinate x axis पे 0 होगा. ये x axis है इसलिए y coordinate यहाँ पे हमने 0 लिया है. the x coordinate be any real number, so we have taken x coordinate, that is x, and y coordinate is 0. And now we have to find out in which ratio. हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट P है जो इस x एक्सिस पे लाई करता है, इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. मींस वी हैव टू फाइंड आउट AP is to PB. स्टूडेंट ये ध्यान देने की बात होती है कि ये अगर A हमारा पहले लिखा है ऑर्डर में, तो यहां से हमें स्टार्ट करना है. आप इसको A नहीं ले सकते, एंड दिस कैन नॉट बी टेकन. यू कैन नॉट टेक दिस x1 y1. आपको x1 y1 यही लेना होगा बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम A to B. वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम B to A. कैसे पता चला? यहां से क्वेश्चन में फर्स्ट में लिखा है A, सेकंड में B, सो दैट इज x1 y1 एंड दैट इज x2 y2 एंड दैट इज xy. So let point P whose coordinates are x is equal to 0 divides line segment AB in the ratio m is to n. आप चाहो, if you want, you can take k is to 1, लेकिन मैं यहाँ पे m is to n ले रहा हूँ. It means, or I want to tell you that AP upon BP, that is m is to n. ये हमने लिया और हमें यहाँ पे x coordinate find out, sorry, इस रेशियो को find out करना है कि what is the value of m and what is the value of n. So for this we have to use the section formula. See here, this is the section formula. Here एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला है, that is mx2 plus nx1 m plus n, and for the y coordinate that is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. स्टूडेंट यहाँ पे गिवन क्या है इस पॉइंट का? x coordinate is given और y coordinate is given. Here y coordinate is given, that is why we have to use this formula. Which formula? This formula. That is why use this formula. Using this section formula, y is equal to 0, m we have to calculate, and what is y2? y2 is 5. See here, y2 is 5.
into 5 plus n, we have to calculate what is y1. Y1 is minus 5. That is minus 5 upon m plus n. On cross multiplication, when this m plus n multiplied by 0 becomes 0, so further we can write 0 is equal to 5m minus 5n, or we can write 5m minus 5n is equal to 0, 5m is equal to 5m, n, or n upon 0, n is equal to 5 by 5, that is 1:1. Therefore, if m is 1, then n is also 1. हम ये कह सकते हैं कि p a b का मिड पॉइंट है. कैसे पता चला? Because m is to n, that is 1:1. Therefore point P is midpoint of line segment A. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का. क्वेश्चन ने पूछा था कि द पॉइंट P which is on the x axis, in what ratio this point P divides the line segment AB. इसका मीनिंग ये हुआ कि A से P तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस B से P का हो गया, राइट. And now what is the second part of this question? Also find the coordinates of the point of division. इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे. देखिए y coordinate is already given, that is 0. Now but we have to find out the x coordinate. now कि x की वैल्यू क्या होगी. So again using the section formula, that is the section formula. So using the section formula, we know m is 1 and n is 1. Here it is given m is to n, that is 1:1. So m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है. x कोऑर्डिनेट के लिए राइट m, that is 1 into x2. What is x2? -4 plus n, that is 1 into what is x1? x1 is 1 and m is 1, n is 1. So x coordinate will be -4 plus 1 by 2. That is -3 by 2. So x coordinate of this point is -3 by 2. So what is the coordinate of this point P here now? Now the coordinate of point P is -3 by 2, 0, because y is already given. So in last, we can write the answer. Therefore, the code required point is, therefore, the coordinates of the required point P is -3 by 2, 0 आंसर. ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस पे लाई करेगा. उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है -3 by 2, and this is the answer of this question. In which ratio this point P is dividing? That is 1:1. P कहाँ लाई करा है? x एक्सिस पे. x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. So that's all for this question, student. Thank you very much.